Hello everyone, this is Sumit. Welcome to PETROGATE PYQ series, and today we will discuss the questions that has been asked from the GATE 2019 and the subject is formation evaluation. Okay, तो वेल लॉगिंग सब्जेक्ट हमारा चल ही रहा है, तो उसके बेसिस पे जो भी हमारे क्वेश्चंस आए हैं पिछले साल में जो भी आप लोग देखे होंगे वो हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं. ठीक है, तो टुडे सेशन वी विल डिस्कस ओनली द क्वेश्चंस दैट इज हैज बीन आस्क्ड इन GATE 2019. ओके, और सब्जेक्ट इज फॉर्मेशन इवैल्यूएशन, नो प्रॉब्लम. द क्वेश्चन नंबर 1 you can see, the question number 1 you can see this match the following question has been asked. Okay, and I think 4 question has been asked in this year, and जो कि काफ़ी अच्छी बात है. Why? Because that is a very good thing. Why? Because it's a very simple subject और very conceptual thing, और बहुत ज़्यादा इसमें याद रखने का नहीं होता है. ठीक है, रटने का नहीं होता है. इफ यू नो द कॉन्सेप्ट देन यू विल अटेम्प्ट द क्वेश्चंस, एंड द कॉन्सेप्ट इज नॉट वेरी वेरी टिपिकल काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, वेरी सिंपल काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट इन दिस सब्जेक्ट. सो माय सजेशन इज दैट कि इस सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर करें, क्योंकि आपके 5 से 6 नंबर आपके कहीं जाते ही नहीं है. ठीक है, इनफैक्ट यू विल सी इन 2019 द क्वेश्चन जनरली आस्क इन दिस सब्जेक्ट लाइक 4 to 5 क्वेश्चन. ओके, एंड इफ किसी ने सब्जेक्ट अच्छे से किया होगा तो उसके मतलब मान के चलो कि 8 नंबर उसका फ्री में आ गया. ठीक है, और 8 नंबर मैटर्स लॉट. ओके, नो प्रॉब्लम. सो नाउ यू विल सी द क्वेश्चंस माय डियर. अगर मैं इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से करूंगा. आई विल अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बाय 2 वे. द फर्स्ट क्वेश्चन आई विल फर्स्ट वे टू अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन इज दैट कि आई विल सी कि सर एक बच्चा इस क्वेश्चन को कैसे करता होगा. तुक्का मार के मतलब समझ रहे हो कि अगर एक मैच हो गया और दूसरा मैच हो गया और मुझे इस ऑप्शन में मिल गया तो मेरा आंसर वो हो गया, तो वो देखेंगे. फिर हम कंप्लीट भी देखेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट वे मैं स्टूडेंट की तरह करता हूं कि जल्दी किस तरीके से कर सकते हैं. हाउ वी विल अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन very quickly. So induction log measure resistivity, not the resistivity. It measure conductivity first, then we will do 1 upon conductivity. You will approach to the resistivity. ठीक है, तो जनरली फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इंडक्शन लॉग से रेजिस्टिविटी मेजर नहीं करते हैं. We will measure by the induction log. We will measure conductivity of the formation. Okay, conductivity of the formation. So you will see we will do your induction log like conductivity. So it means P goes to second, it means P goes to third, P goes to third. I think this will be right or this will be right, no problem. Then I will go for dielectric. ठीक है, बच्चों को नहीं पता dielectric क्या है, no problem. So I will go to the next cell potential log. Cell potential log मतलब SP log. Okay, SP log मतलब मुझे पता है कि SP log formula is that. You can see the particular formula. SP log formula this, and -71 log RMF1RW. I know this value from the log. I know this value. Resistivity of mud filtrate I know very well, because whatever the mud we are sending into the formation, that is the mud filtrate. Okay, तो जो मैंने भेजा है अपने घर से वेलबोर में, तो उसकी रेजिस्टिविटी पता होना मुझे जाहिर सी बातें पता होगी. ठीक है, तो इफ आई नो दिस पर्टिकुलर थिंग, तो आई कैन कैलकुलेट फॉर्मेशन वाटर रेजिस्टिविटी. तो इट मीन्स वो इक्विवेलेंट वाटर रेजिस्टिविटी. इट मीन्स आई कैन कैलकुलेट R goes to second, R goes to second, R goes to second, R goes to R goes to first, R goes to first. I think this is the right option. Okay, खत्म. So this is R goes to fourth is given. So no, this is not the right answer. So you will approach this kind of way, no problem. तो बाकी की चीजें भी हम लोग देख लेते हैं, है ना. एक स्टूडेंट कैसे अप्रोच करता है वो हमने देखा है, और हाउ वी विल अप्रोच कि हम लोग इसको कैसे समझते हैं सारी चीजें. सो वी विल ऑल्सो सी, नो प्रॉब्लम. सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इलेक्ट्रिकल लोग. सर इलेक्ट्रिकल लोग इज दैट, इलेक्ट्रिकल लोग जनरली 3 तरीके के होते हैं. देयर इज 3 काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल लोग. फर्स्ट रेजिस्टिविटी log, also you can say the also example of electrical log. Cell potential log also example of electrical log. Induction log also example of electrical log. Okay, but here is given what? Cell potential and induction log already given. So it means this electrical log means what? Resistivity log. This electrical log generally means he is talking about, means this electrical log meaning is resistivity log, because this is the only 3 log of electrical log, no problem. So now you will see, और वैसे भी logging में generally अगर हम बोलूँ तो electrical log, तो that will resistivity log. ठीक है, पहली प्रायोरिटी resistivity log को हम लोग देते हैं, लेकिन जनरली देखा जाए तो तीनों लोग इलेक्ट्रिकल लोग ही हैं. ठीक है, क्योंकि ये तीनों क्या करते हैं, ये तीनों इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी मेजर करते हैं. ठीक है, इधर में देखूँ तो रेजिस्टिविटी ऑल्सो मेजरिंग रेजिस्टिविटी ऑफ द फॉर्मेशन, इट मेजर ऑल्सो कंडक्टिविटी ऑफ द फॉर्मेशन. सो दीज आर द इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, एंड दिस इज ऑल्सो मेजरिंग द वोल्टेज वट एवर द सेल पोटेंशियल इज जनरेटिंग इन द फॉर्मेशन और लेयर और स्ट्राटा. So these are the electrical properties. That's why we are saying these are the electrical log. But these 2 log already given, this one and I think this one. So electrical log means here is only resistivity log. Okay. So resistivity log measure electrical log or resistivity measure
definitely resistivity. Okay, so it means S goes to second, S goes to second. So I think ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया. Now we will talk about dielectric. Dielectric actually होता क्या है? This is also a electric log also. like हम लोग क्या करते हैं कि किसी इलेक्ट्रिक किसी भी log से अगर मैं बात करूं तो if I am talking about a log and that measuring the electric property of the formation or of the object, okay, or you can say electric property also called a permittivity. Permittivity sir, अरे यार 12th और 9th I think 11th standard में you have seen कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू Q1/Q2/R². समथिंग दिस काइंड ऑफ फॉर्मूला यू हैव सीन. तो दिस एप्सिलॉन नॉट इज योर परमिटिविटी. ओके, सो इट मीन्स कि हाउ इजीली एंड हाउ मच चार्ज कैन एक्यूमुलेट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए परमिटिविटी. ओके, ये ऑब्जेक्ट कितना इजीली और कितना ज्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज एक्यूमुलेट कर सकता है, दैट विल represented by permittivity. तो it means कहीं ना कहीं dielectric log means your permittivity. It means Q goes to 4th. Okay, so इस तरीके से कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है. Okay, so I will not go in detail because this is not your subject now. Okay, so अभी आपको logging देखना है. Now you have to study only the logging. So accordingly अगर आपको 2 या 3 ऑप्शन भी मिल रहे हैं तो आपका आंसर यहाँ पे आ जा रहा है. No problem. So now we will see the next question, my dear. So right option will be your D. No problem. Now you will see the next question. You can see. So now you will see the question number 2. Which one of the following rocks and reservoir fluid are arranged in decreasing order? Okay, there is some rocks. Okay, this is rocks. Okay, shale rock, and some fluid also, gas or brine. Okay, their electric resistivity also I have to arrange these rocks and gases or rocks and fluids in decreasing order of electrical resistivity. Okay, means higher I will put here and lower I will put here. No problem. Assume the rocks have equal porosity and filled brine and fluid whatever. Okay, means he is saying कि जो मेरे पास different rocks हैं, I have the different rocks or fluid also, and I have to arrange these rocks and fluids accordingly, means higher to lower, higher resistivity to lower resistivity. Okay, and resistivity of thermal resistivity or electrical resistivity, my dear, thermal resistivity, no, electrical resistivity. So he is telling us कि arrange these rocks and fluids in decreasing order of electrical resistivity. Maybe this question change in electrical conductivity also, maybe this question change thermal conductivity also, maybe this question can be changed in thermal resistivity also. So 4 kind of questions you can see this kind of question. Okay, and in fact ये generally question आ भी रहे हैं, generally these are the question is coming day by day. तो you will see the electrical resistivity question this. Okay, और अभी इसके बाद शायद एक thermal conductivity का भी आया था, शायद thermal resistivity का भी आया था एक क्वेश्चन. ऑल्सो यू विल सी इट ऑन बेस्ड ऑन थर्मल रेजिस्टिविटी. दिस क्वेश्चन वाज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी. सो बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं तो थर्मल है या इलेक्ट्रिकल है. ओके, तो दोनों क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा बिकॉज बोथ काइंड ऑफ क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड. ओके, एक 2020 में आया था, एक 2019 में आया था, 2019. ओके, नाउ जस्ट टेल मी इफ आई एम टॉकिंग अबाउट गैस थ्रू द गैस इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू फ्लो द चार्जेस बिकॉज देयर विल बी द पार्टिकल ऑफ द गैस इज वेरी फार. ओके, so you will see, so if you want to apply the current, so that current will not flow through the gases because there is no electric conductivity you are having, means the resistivity of the gas will be high. बिकॉज यहाँ पे कोई मीडियम ही नहीं दिख रहा है मुझे, गैस के पार्टिकल बहुत दूर है, तो यहाँ पे करंट फ्लो कराना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा. तो इट मीन्स रेजिस्टिविटी ऑफ दिस गैस विल बी वेरी हाई. तो इट मीन्स द गैस रेजिस्टिविटी विल बी वेरी हाई एज कंपेयर टू एनी अदर मटेरियल. ओके, कुछ भी आप दुनिया में ले लो, गैस की जो भाई रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा ही होगी. तो यहाँ पे इट मीन्स ऑप्शन बी और सी मेरे दिमाग में लग रहा है कि यहाँ पे सही हो सकता है. सो आई एम थिंकिंग दैट ऑप्शन बी सी मे बी राइट. ओके, तो यहाँ पे हम लोग इनमें से कोई एक ऑप्शन निकालना है मुझे. ठीक है, नो प्रॉब्लम. नाउ मुझे लग रहा है कि ब्राइन जो है व्हाट एवर द ब्राइन यू आर हैविंग, ब्राइन मींस द मिक्सचर ऑफ NaCl.
ब्राइन क्या होता है? ब्राइन इज ऑल्सो ए वाटर, brine is also a water, but if you are adding some NaCl in this particular water, so this mixture is called now brine. So it means if you are apply voltage, so current will be very easily flow, because NaCl also will be break in Na plus and Cl minus, and electricity can flow easily. Okay, so it means brine has very low resistivity. Brine has very low resistivity as compared to these say rocks. Okay, so now brine had a lower resistivity. Okay, so now but in both question brine in the last. Okay, so I think मुझे यहाँ से कुछ अंदाजा नहीं लगा. ठीक है, जब जो मुझे अंदाजा बी और सी में पहले ही मिल गया था, वही बी और सी अभी भी मिला. अगर मेरा ब्राइन कहीं यहाँ पे लिखा होता तो मैं अंदाजा लगा लेता कि ब्राइन की रेजिस्टिविटी लो होती है, तो ब्राइन शुड बी एट द लास्ट, सो इट मीन्स दिस शुड बी द राइट आंसर. बट इन दिस बोथ ऑप्शन ब्राइन हैज बीन रिटन इन द लास्ट. सो अभी मेरा रिजल्ट कुछ नहीं निकल पाया है. ठीक है, सो नाउ व्हाट आई विल सी, आई हैव to remember some rock resistivity and rock conductivity. ठीक है, so these things that you must remember, these things that you must learn. Okay my dear, so these are the basics rock. Okay, in fact यहाँ पे काफी rock given है, lot of rock resistivity has been given, but I will not suggesting you, I will not recommending you to remember all the rocks resistivity and like conductivity. I will say just remember some few rock resistivity. Okay, and I will not say कि remembering resistivity in numerical data. No, I will only say कि which rock has the greater resistivity, which rock has a lower resistivity. बस तुमको ये याद रखना है. That you have to remember. ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि इसकी resistivity 1000 होती है, 10,000 होती है, 20,000 होती है, ये याद नहीं रखना है. बट तुम ये याद रख लो कि किसकी resistivity किससे ज्यादा है और किससे कम है, बिकॉज क्वेश्चन इन्हीं पे बन जाएगा. That will वो ऑप्शन ये नहीं पूछेगा, he will not ask you कि सर इसकी resistivity 1000 थी या इसकी 500 थी. ठीक है, डेटा वाली चीज नहीं पूछेगा, बिकॉज एक टिपिकल वाली चीज रहेगी, ये रटने वाली चीज रहेगी. ठीक है, तो मेरा सजेशन ये है कि आप बस कौन सी किससे ज्यादा कम है वो याद रख लीजिए, उसी के अरेंजमेंट पे क्वेश्चन काफी बन जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि लाइमस्टोन हैज, देखिए इन दिस पर्टिकुलर एक्सिस यू विल सी द रेजिस्टिविटी, इन दिस पर्टिकुलर एक्सिस यू विल सी द कंडक्टिविटी. तो यू विल सी जब हम यहां से यहां को जा रहे हैं तो रेजिस्टिविटी जो है दैट इज इंक्रीजिंग इफ यू आर गोइंग दिस डायरेक्शन. ओके, एंड इफ रेजिस्टिविटी इज इंक्रीजिंग इट मींस कंडक्टिविटी मैं यहां पे लिख रहा हूं, कंडक्टिविटी इज डिक्रीजिंग. ओके, बिकॉज इफ यू आर गोइंग दिस साइड टू दिस साइड, नो प्रॉब्लम. सो नाउ यू हैव टू रिमेंबर सम काइंड ऑफ रॉक्स, और मैं उस रॉक को टिक मार्क कर दे रहा हूं. दैट रॉक रेजिस्टिविटी conductivity you must remember. Okay, so limestone has the highest resistivity. Okay, then highest resistivity, then dolomite. Okay, no problem. Then coal you have to remember, and like sandstone you have to remember, shale you have to remember. Okay, तो आप यहाँ पे देख रख सकते हो salt water or brine has the lowest resistivity, no problem. Okay, तो यहाँ पे आप लोग is there anything that you must remember? I think no. Okay, no problem. So now you will see एक क्वेश्चन आप यहाँ से और भी जज कर सकते हैं कि इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक हैज द हायर रेजिस्टिविटी एज कंपेयर टू सेडिमेंट्री रॉक. ओके, सो दिस काइंड ऑफ जजमेंट यू हैव टू रिमेंबर. ओके, दिस काइंड ऑफ जजमेंट यू कैन टेक फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टेबल. ओके, बाकी मैं किसी का आपको नहीं बोल रहा हूं कि इसका आप याद रखिए, इसका आप याद रखिए. नो, द मेजर रॉक्स के रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी यू कैन रिमेंबर बिकॉज द क्वेश्चन जनरली कैन फ्रेम फ्रॉम दीज रॉक ओनली. ओके, नाउ यू विल सी द लाइमस्टोन has the highest resistivity, it means, and he is given shale, तो बस मेरा आंसर यहीं पे आ गया. तो क्या you will get the right answer. So limestone has the highest resistivity if I am talking about these rocks only. I am not talking about the gas and brine. I will talk about these rocks only. Okay, fluid की बात मैंने कर ली है, अब बात कर लेता हूँ rocks की. In rocks you will see limestone has the highest porosity resistivity and shale has the lowest in these rocks. Okay, so now you will see this C will be your right answer. Okay, C will be your right answer. I think you got it, no problem. So now you will see the C option was right. Okay, चलिए. So this table is very important, so you can note it down if you want. In fact, net पे आप देखोगे तो you will also get this particular table. No problem. Now the question number 3 you will see.
ठीक है. In question number 3 is that कि sir the neutron log porosity phi n is given 0.09, it means in fraction is given, and in percentage that is 9%, and density log porosity phi d is given 0.24, it means higher porosity as compared to this. I think that will be your what? That will be your 24% in the crossover region. Okay, crossover region, okay, no problem. And he's also given, and then the average porosity of the gas bearing region is I have to calculate. Okay, I have to calculate the average porosity. My dear, I am telling you, suppose I am telling you, it's a very important thing. Suppose this is your trace you will see of density or neutron log. Okay, and neutron trace is what? Suppose this is your neutron data. Okay, and this is your density data. Okay, density data I will take a different color. Okay, this is your density data. Okay, density log graph will represent suppose minus 15 to 45. Okay, and density neutron porosity is increasing from this side. Okay, density in density log, what we are measuring? We will measure definitely bulk density of the formation. So that will increasing from this side, because neutron porosity increasing from this side to this side, and density log that will be opposite. Okay, आप लोग कहीं भी देखोगे तो opposite देखने को मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ऐसा ग्राफ बना रहा हूं जो किताबों में मिलता है ब्रो. ठीक है, तो these are the graphs that you will get in books. Okay, हमेशा ये उल्टे होते हैं, हमेशा ये उल्टे होते हैं. अगर न्यूट्रॉन इधर से इधर बढ़ता हुआ मिलेगा तो उसके नीचे डेंसिटी का ग्राफ वो उल्टा बढ़ता हुआ मिलेगा. तो यहाँ पे डेंसिटी मेजर, डेंसिटी लोग डायरेक्टली पोरोसिटी नहीं मेजर करता है. न्यूट्रॉन डायरेक्टली पोरोसिटी दे रहा है ब्रो भाई. ठीक है, न्यूट्रॉन लोग इज गिविंग यू डायरेक्टली पोरोसिटी वैल्यू, बट डेंसिटी लोग इज नॉट गिविंग यू डायरेक्टली पोरोसिटी वैल्यू. दैट विल गिव द बल्क डेंसिटी. सो द डेंसिटी लोग गिव्स योर बल्क डेंसिटी, एंड व्हेन यू आर पुटिंग दिस बल्क डेंसिटी इनटू द पोरोसिटी फॉर्मूला or like density log formula, so that you will get the porosity that is calculating by bulk, that will calculating by density log. तो ठीक है, तो यहाँ पे जो डेंसिटी का स्केल है वो उल्टा लेता हूँ मैं न्यूट्रॉन से. ओके, सो इट मीन्स द बल्क डेंसिटी वैल्यू मैक्सिमम 3 यू कैन से, और मिनिमम यू विल से आई विल टेक ए ब्लू कलर. ओके, मिनिमम मैक्सिमम 3 और मिनिमम यू कैन से 1.5. ओके, अप्रोक्स कुछ भी ले लीजिए आप. ठीक है, तो नाउ आई एम टेकिंग ए 2 ग्राफ. ओके, density scale I am representing by this blue color, and you can say neutron curve I am representing green color. So in crossover region you will say, suppose this is your gas formation, so you will say your graph will be density log will goes to minimum side in this side. Okay, no problem. And density log gives the also minimum side means what? This is the minimum side. Okay, means lowest side. Okay, lowest side. Okay, so now you will see what this kind of crossover effect you will say. Okay, so in gas zone this is not representing the correct value. One is neutron log gives the less value. Means you will say the less value. Okay, actual porosity may be this, but this is gives a less value. So you can say in gas zone neutron log gives your underestimated porosity. This can be a very important question. Okay, so you will say maybe the porosity of the log is this, actual porosity is this, means suppose this, but neutron log gives your 8. ओके, मीन्स अंडर एस्टिमेटेड. लिसन में केयरफुली. ओके, सो हमने मैनेज कर लिया, एडजस्ट कर लिया, चलिए भाई ठीक है, आप ये गलती कर रहे हो तो कोई बात नहीं, हम लोग किसी और से डेटा ले लेंगे. तो हमने डेंसिटी की बात की, भाई डेंसिटी लॉग जस्ट शो द रीडिंग ऑफ योर लोड्स इन योर गैस जोन. ओके, सो इसने कहा कि मैंने अपनी जो डेंसिटी लॉग है, मेरी जो डेंसिटी है वो हालांकि इतनी आनी चाहिए थी बल्क डेंसिटी, बट मैंने वो घटा दी है. क्यों? क्योंकि वहां पे गैस जोन है. तो भाई जब मेरे पास फॉर्मूला है phi इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मैट्रिक्स माइनस डेंसिटी ऑफ बल्क upon density of matrix minus density of fluid. So it means bulk density you are putting less value as compared to this, because this density value decreasing from this point to this point, so this will be your less as compared to this. So now if you are putting less value, so it means this value will higher, this value complete will higher, or porosity will be higher. So it means bulk, it means density log in gas zone gives overestimated porosity, and neutron log gives in gas zone underestimated porosity. So it means
मीन्स एक यहाँ पे बढ़ा के दे रहा है, एक यहाँ पे घटा के दे रहा है। एक ओवर से ओवर डेंसिटी लॉग गिव्स ओवर एस्टिमेटेड एंड न्यूट्रॉन लॉग गिव्स योर अंडर एस्टिमेटेड, बट बोथ लॉग्स इज नॉट गिविंग यू करेक्ट वैल्यू। कोई भी एक सही वैल्यू नहीं दे रहा है, एक बढ़ा के दे रहा है, घटा के दे रहा है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक एवरेज काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, आई विल टेक एवरेज काइंड ऑफ थिंग। सो मैं ये दो तरीके से कर सकता हूं। अगर यहाँ पे बात समझना, कैलकुलेट द ट्रू एवरेज पोरोसिटी फ्रॉम डेंसिटी एंड न्यूट्रॉन पोरोसिटी लॉग। सो अगर यहाँ पे गैस जोन है, गैस जोन है, तो आई विल यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला टू कैलकुलेट योर एवरेज और ट्रू पोरोसिटी बाय न्यूट्रॉन और डेंसिटी पोरोसिटी लॉग। बट अगर कहीं पे गैस जोन नहीं है और कोई अलग तरीके की रोक मुझे देखने को मिल रही है जिनमें डेंसिटी और न्यूट्रॉन लॉग इज नॉट गिविंग ए सेम पोरोसिटी वैल्यू, सो इन दैट केस आई विल यूज, यू विल सी, if the formation contain no gas fluid, means either oil or either water you are having, so in that case I will take this average porosity value, this average porosity formula. So I will use two different kind of formula. If your value of, if your zone is gas formation or sometimes gives a light fluid having your zone or rock having the light fluid, so it means you will assume कि sir he is talking about the gas fluid. It means average calculation में हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, ठीक है। और अगर मेरे पास वाटर और ऑयल गिवन है या कुछ नहीं बोला है, डेफिनेटली हालांकि बोलेगा तो वो बोल देगा कि देयर इज ऑयल रिजर्वोयर, ऑयल जोन, सो यू विल यूज एवरेज कैलकुलेशन में ये वाला फॉर्मूला। ठीक है। सो नाउ द थिंग इज दैट सर, नाउ मेरे यहाँ पे दिमाग में आ जाता है द स्टूडेंट्स विल गेट कि सर एवरेज टॉकिंग अबाउट या ट्रू टॉकिंग अबाउट, सो इट मीन्स द वैल्यू ऑफ द आंसर विल बी मिडल ऑफ दीज वैल्यूज। ओके, नो प्रॉब्लम। सो मैं यहाँ क्या करता हूँ, दिस इज द गिवन व्हाट गैस बेयरिंग जोन, सो आई विल use this particular formula, phi equal to this formula I am using, under root neutron porosity value means 0.09 to the power square plus the density square means what, means 0.24 square by 2. Okay, by 2. So I will do the calculation for you, then your answer you will get. Okay, 0.24 square, okay, plus 0.09 square, okay, divide by 2, and I will take under root of this, so you will get what, phi equal to 0.1812, means this is the middle value of this and this. Okay, no problem. If your answer is not in the middle range of these value, so it means you just understood कि सर कहीं आपने कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी है। ठीक है, तो ये चीजें होती है कॉमन सेंस जो हम लोगों को हर एक क्वेश्चन को सोल्व करते हुए देख लेना है कि आंसर इस रेंज में आना चाहिए था क्या, हाँ आना चाहिए था, आ रहा है क्या, हाँ आ भी रहा है। ठीक है, मतलब इससे आइडिया कहीं ना बहुत जगह लग जाता है मेरे भाई, बहुत जगह लग जाता है। यू विल सी कि सर ऐसा कहाँ होगा, डेफिनेटली आई एम टेलिंग यू, इफ यू आर कैलकुलेटिंग B naught value, so that should be greater than 1 my dear. If your answer B naught value is you are having 5000, तो it means आपने कहीं गलती कर दिया है, because B naught की वैल्यू अप्रोक्स 1.2, 1.3, 1.5, ओके, so इसी रेंज में घूमता है। ठीक है, if BG की वैल्यू if you are having, okay, in reservoir I am talking about less than 1, तो it means you are doing right way, your calculation may be right. Okay, if your value BG की वैल्यू greater than 1 आ रही है, तो it means आपने कहीं गलतियां कर दी हैं। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देता हूं, शायद आप कुछ बच्चों को पता भी होगा, किसको नहीं पता होगा। ln RE/RW आप कितनी जगह यूज करते हो, नंबर ऑफ वेव, नंबर ऑफ इन फॉर्मूला यू आर हैविंग दिस ln/RE। ओके, दिस वैल्यू ऑलवेज बिटवीन यू कैन से 6.5 to 9। ओके, इसकी वैल्यू हमेशा इसके बीच में रहती है। अगर इसकी वैल्यू आपके बीच में नहीं आ रही है, इफ यू आर नॉट हैविंग दिस ln RE/RW, ठीक है, वैल्यू इज नॉट हैविंग दिस रेंज, तो इट मींस मे बी आपने डायमीटर ले लिया हो, मे बी आपने रेडियस गलत ले ली हो, मे बी आपने इंच में ना बदला हो, मे बी आपने फीट में ना बदला हो, तो कुछ कैलकुलेशन आपने गलती जरूर करती होगी। ठीक है, तो ये चीजें क्या होती हैं, ये मेरी कैलकुलेशंस की एक्यूरेसी को बढ़ा देती हैं इफ यू आर यूजिंग योर कॉमन सेंस। ओके, बहुत जगह होता है। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखेंगे हमेशा कि आप इसकी वैल्यू हमेशा ये आती है। बहुत बच्चे ऐसा करते हैं कि आंसर इज गिवन कि केसिंग डायमीटर 7 इंचेस, तो वो यहाँ पे 7 इंच दे लेगा। मेरे भाई यू हैव टू डिवाइड बाय 2, देन यू विल गेट द रेडियस ऑफ द वेलबोर। ओके, सो यहाँ पे जैसे ही आपका आंसर 15 आएगा तो आप देख लोगे कि यू डिड सम मिस्टेक्स, कहीं ना कहीं कुछ हुआ है, तो आप देखोगे अरे यार डायमीटर को तो नहीं बदला मैंने, तो इट मीन्स यू विल अप्रोच टू योर राइट वे। ओके, कैलकुलेशन कहीं ना कहीं सही हो सकती है।
तो यहाँ पे वही बात है भाई, ठीक है। तो नाउ द पोरोसिटी वैल्यू 18%, तो जो कि बीच में है 9 पोरोसिटी से और 24 पोरोसिटी के बीच में। चलिए, तो ये वाली बात होगी क्या, ये क्वेश्चन फॉर्मूला आप याद रख लेंगे, कोई नहीं, नो प्रॉब्लम। आंसर विल बी दिस, ओके, आंसर विल बी दिस, नो प्रॉब्लम। इन फ्रैक्शन आई हैव टू कैलकुलेट, दैट विल बी योर राइट आंसर, इज गिवन इन गेट रेंज, ओके, नो प्रॉब्लम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन एंड दिस इज वन ऑफ द माय फेवरेट क्वेश्चन, ओके। इस तरह के क्वेश्चन मुझे अच्छे लगते हैं, क्यों? क्योंकि ये ग्राफिकल है और इफ यू नो द कॉन्सेप्ट एंड यू नो, क्योंकि यहाँ पे कई कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग जाते हैं, ओके। यहाँ पे एक आपको एक सिंपल आपकी कॉमन सेंस भी दिख जाएगी, यहाँ पे आपको फॉर्मूला भी लग जाएगा। सो एक मुझे ग्राफिकल क्वेश्चन करने में काफी मजा आता है, अगर ग्राफिक चीज दिए हो और मुझे दिया हो कि ये P1 होगा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सो दैट विल वेरी इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ क्वेश्चन। और जनरली गेट 2018 और आई थिंक मैं बोलूंगा कि 18 से ग्राफिकल क्वेश्चंस पे काफी मतलब चीजें ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए, सो नाउ वी विल सी दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन माय डियर। एन एक्सप्लोरेटरी वेल encountered 3 reservoir formation, okay, so I have 3 formation and the formation is given S1 and S2 and S3, okay, so I am writing S1, S2 and S3, no problem. And S1 perfectly cemented, okay, so this is your perfectly cemented, no problem, okay, very good, okay. Next, S2 is poorly cemented, means poorly cemented, so I am writing complete here, poorly cemented, okay, no problem. S3 your fractured reservoir, means very bad cementation there, okay, fractured. The formation factor is given, okay, I know this particular formula, कोई इसमें गड़बड़ वाली बात नहीं है। Phi I know the porosity, M is cementation factor, A is tortuosity, assume कर लो, चलो एक, कोई बात नहीं है, you can assume 1, okay, and for all the formation, okay, I can assume all the formation A is 1, okay, no problem, I will assuming A is 1 now, no problem, for all the formation, okay. The log plot is given, yes, no problem, is given, yes, okay. So he is telling me I have this particular plot and the plot formation factor and porosity, okay, and no problem, and there is a 3 curve PQR, okay, no problem, and PQR I want to tell you now कि जो this is the P is your perfectly cemented or this R is perfectly cemented or this your poorly cemented or this is your poorly cemented or this is, so these match the following I have to do, means S1 representing what, P, means perfect cementing representing P, or Q2 means poorly cementing representing Q, S3 means fractured rock or fractured very bad cemented rock representing by R, or second option with another kind of third option you are having. So that I have to match the following, okay. But मुझे थोड़ा अटपटा सा क्वेश्चन लगा स्टार्टिंग में, सर ये क्या है मतलब, है ना, कोई बात नहीं है। So what I will do, I will see this particular graph first. I will see this particular graph, my dear. I know F equal to A upon phi to the power M, okay. So it means F directly inversely proportional to the phi, okay, no problem. If phi increasing तो F decreasing, F increasing तो phi decreasing, no problem. So you will see if F value is increasing तो porosity value decreasing. So this is your graph, no problem. So यहाँ तक तो बात मेरी clear है, okay. But my dear, this is for when you are taking M is constant, M is, suppose M is 1, okay. But if I am increasing, listen, F equal to A upon phi to the power M, and M can be 1, M can be 2, M can be 3, M can be 4. So because of different M means perfectly cemented, poorly cemented, bad cementing और worst cementing, okay, सबसे बेकार cementing, सबसे अच्छी cementing, और ये बीच की बात है, ठीक है। तो आप ये देखोगे कि different M, okay, I know कि F inversely proportional phi है, ठीक है। तो ग्राफ तो हमेशा ऐसा ही बनने वाला है, ठीक है। Always you will see the graph is different in this like this, okay. But because of M value if you are changing, तो graph will shifting this direction or this direction. So different M if you are having, तो graph will be shifting, but that will be inversely proportional, okay. So now you will see, now sir मुझे नहीं पता ग्राफ इस साइड बढ़ेगा, now suppose M value you are having 1, so your graph is this, okay. If you are increasing M value, तो either graph will shifting this side, other graph will shifting this side, but the graph trend will be same because inversely proportional है, no problem. So वही मुझे देखना है,
ठीक है, वही मुझे देखना है. सो व्हाट आई विल डू, लिसन मी केयरफुली, व्हाट आई विल डू, आई एम टेकिंग एग्जांपल f इक्वल टू a अपॉन 5 to the power m. ओके, a वैल्यू आई नो, सपोज आई एम टेकिंग एग्जांपल 1, m वैल्यू सपोज आई एम टेकिंग ए 20% पोरोसिटी, 20% पोरोसिटी सपोज यू आर हैविंग, आई एम अज्यूमिंग, सो पोरोसिटी वैल्यू आई एम राइटिंग 0.20, नो प्रॉब्लम. ओके, सपोज m वैल्यू आई एम चेंजिंग नाउ, m वैल्यू आई विल टेक 1, m वैल्यू आई विल टेक 2, m वैल्यू आई विल टेक 3. ओके, सो अकॉर्डिंगली आई विल शिफ्टिंग m वैल्यू, नो प्रॉब्लम. हालांकि m की वैल्यू 2 और 3 तक नहीं जाती, यहां पे वही बात आ गई फिर घूम फिर के कि इफ योर m वैल्यू यू वांट टू कैलकुलेट द m वैल्यू एंड m वैल्यू इज यू आर हैविंग 3, ओके, और m वैल्यू यू आर हैविंग 10, सो माय डियर m वैल्यू इज नॉट ग्रेटर देन 2.5 और 3. m की वैल्यू सीमेंटेशन फैक्टर 2 से ज्यादा, 2.5 से ज्यादा, 3 से ज्यादा बिल्कुल हो ही नहीं सकता. ओके, सो इट मीन्स अगर आपका m का वैल्यू 10 आ रहा है तो इट मीन्स जो अपने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है. तो यही कॉमन सेंस वाली चीजें हैं जो आपकी एक्यूरेसी को बढ़ा देती है मेरे भाई. ठीक है, चलिए, सो नाउ व्हाट आई विल सी, हालांकि ये चीजें सारे लेक्चर्स में डिस्कस कर रखी है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दीस आर द थिंग्स इन आवर लेक्चर. ओके, सो नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल टेक एग्जांपल m1. ओके, तो योर आंसर विल बी व्हाट, आई हैव माय कैलकुलेटर, नो प्रॉब्लम. सो आई विल डू 1 by 0.20, तो योर आंसर f वैल्यू यू आर हैविंग 5. Okay, so your f value you are having 5, no problem. If you are taking m value is 2, then what happen, m value if I am taking 2, then what happen, okay, then what happen, 0.20 की power 2 and 1 by this, so you will get 25, you will get f value is equal to 25. Okay, no problem. If you are having m value is 3, so what answer you will having, 0.2 to the power 3, so your 1 by this your 125, f value equal to 125. Okay, just tell me, if you are increasing, your graph is this when m value equal to 1. Okay, now the same porosity, suppose this is your 20%, this is your 20% value. Okay, suppose this value you are having, this value you are having this. Okay, now this value, now for increasing m, suppose I am increasing m value equal to 2, so your f value should increase. So f value increase, so f value increase when you are plotting this graph, or f value increase when you are plotting this graph. Okay, so m equal to 2 के लिए ये ग्राफ होना चाहिए, ये ग्राफ होना चाहिए. क्यों, कैसे पता चलेगा, मुझे देखना है m equal to 2 रखने पे f की वैल्यू बढ़ी है, f वैल्यू इंक्रीजिंग, इट मीन्स इंक्रीजिंग मीन्स माय डियर, इट मीन्स यू विल सी कि अगर मैं ये वाला ग्राफ मानता हूं तो f की वैल्यू तो यहां घट जाती है. अगर मैं ये वाला ग्राफ मानता हूं तो f की वैल्यू इस वाली वैल्यू से 5 से 25 यानी कि बढ़ जाएगी. तो इट मीन्स f m इक्वल टू 1 के लिए ग्राफ ये वाला बनना चाहिए. ओके, m की वैल्यू 3 के लिए, इफ यू आर टेकिंग m वैल्यू 3, तो f वैल्यू मोर इंक्रीज यू विल सी, तो ग्राफ विल शिफ्टिंग दिस साइड, नॉट दिस साइड, बिकॉज इफ यू आर प्लॉटिंग दिस साइड तो f वैल्यू फॉर सेम पोरोसिटी f वैल्यू विल मोर डिक्रीज, बट आई वांट टू इंक्रीज f वैल्यू, so this graph will be this for m value 3. So it means if the m value is increasing, your graph will be shifting upward direction. Okay, no problem. So now same formula, same picture for you are having this for different m value, means m value increasing if and you are going to upward direction. Okay, no problem. So it means that whatever the maximum you are having, this is your what, m value is higher, m representing what, cementing factor. It means this is your perfectly cementing. Okay, perfectly cementing means in this particular picture you will see R goes to your perfectly cemented. Okay, perfectly cemented, and perfectly cementing means S1. Perfectly cementing means S1. Okay, so R goes to S1, no problem. Now P very bad cementing you will have, means this goes to your fracture rock. This fracture rock means S3. Fracture rock means S3, and this will be in बीच में, ये middle में रहेगा, no problem. So now S1 goes to R, either this will be your right, either this will be your right. P goes to S3, so and this will be your right answer. Okay, so this will be your right answer. Okay, now we will see the next thing. Now this is the thing that I have explained. Okay, now very simple question. This is also very simple question, or simplest question I will say. हम लोग जब भी SP लोग पढ़ते हैं, if you are study SP लोग, so this kind of question हम लोग हमेशा पढ़ते ही हैं. This kind of concept हमेशा हम लोग देखते हैं. So always we will see this concept because it's a very important and very basic or very simple concept, and this is the same question which is based on this concept. Okay, so a single well encountered multiple sand
clean, okay, clean sand for exactly of same thickness, same porosity and same permeability, okay, no problem. And but we have multiple clean sand, matlab different clean sand we are having, like you can say one sand, this sand, so same thickness you are having H1 H2 H3 H1 H2 H3, okay, H1 not H1 H2 H3, that will be same H, okay, no problem. And like porosity also same, okay, and permeability also same, means you can say the like petrophysical property you can say the same, okay, of all the layers. But the thing is that what happen, you will see whatever the in SP log just tell me कि potential generate कैसे होता है भाई, SP log कैसे, how the potential will generate, okay, in this SP log, okay. So now you will see, suppose this is permeable zone and there is some fluid of formation fluid also you are having, and whatever the mud we are using at the time of drilling, so that will penetrate in the permeable zone, not impermeable zone. Suppose this is your impermeable zone, so mud filtrate will enter into the permeable zone. So what happen, this mud filtrate also having some resistivity of mud filtrate, okay, no problem, and this formation fluid also having some resistivity, okay. So these resistivity definitely have some variation, ऐसा नहीं होगा कि these resistivity will same, okay, इसकी भी 5 है, इसकी भी 5 है, ये तो एक इत्तेफाक हो गया, जिसे कोइंसिडेंस, और अगर ये कोइंसिडेंस होता है तो एसपी लोग गलत रीडिंग देगा, इनफैक्ट रीडिंग ही नहीं देगा, इनफैक्ट दैट विल नॉट गिविंग ए राइट करेक्ट रिजल्ट, ओके. सो मैं इस पे फिर डिपेंड नहीं होऊंगा, देन आई विल अप्रोच टू द अनदर लिथोलॉजी log that is called a gamma log, ठीक है. अगर SP log gives you incorrect result, so I will leave it and I will go for the another lithology log, that is your gamma log. इसीलिए हम लोग एक ही टाइप के different log यूज भी करते हैं. If one log is not giving a correct result or gives a misleading result, then I will approach to the another result so that कि मैं correct conclusion तक पहुंच सकूं, ठीक है, no problem. So now you will see definitely ऐसा तो ऐसा नहीं होगा कि सर जैसा फॉर्मेशन की रेस्टिविटी थी ऐसा ही मेरा मड भी चला गया और वहां कोई रिजल्ट नहीं हुआ, ऐसा बहुत कम इंसिडेंस हो सकता है, ठीक है. लेकिन कहीं ना कहीं वेरिएशन मुझे रेस्टिविटी का देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो मड मैंने भेजा है ये मैंने खुद से भेजा है और उसकी रेस्टिविटी एक खुद अलग ही है एज कंपेयर टू दिस. सो बिकॉज ऑफ रेस्टिविटी, सो इट मीन सैलिनिटी ऑफ मड फिल्ट्रेट विल डिफरेंट, सैलिनिटी ऑफ मैं दोबारा लिख देता हूं, सैलिनिटी ऑफ फॉर्मेशन फ्लूइड और फॉर्मेशन वाटर विल डिफरेंट, ओके. सो बिकॉज ऑफ दिस सैलिनिटी योर आयंस विल मूव हियर एंड देयर, ओके. इफ दिस सैलिनिटी इज हायर, सो आयन विल मूव दिस साइड, if this salinity is higher, so ion move this side, no problem. So this direction will tell you or will gives a response, either you are having the negative result on the SP log, either you are having the positive result in the SP log. If this resistivity is same, that is your, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये बहुत मुश्किल कॉन्सिडेंस है. अगर ये हो गया कि this resistivity same, इसका it means the salinity of this or this also same, it means no ion movement will be there, it means no deflection you will see in this particular zone, so that will your zero deflection, okay. Now you will say, sir just tell me when your resistivity, when your deflection will towards the positive side, when your deflection will towards the negative side. हालांकि although you were having a different mechanism also to movement of this ion, either this movement also and this movement ion also moving from impermeable layer to wellbore, okay. This is your shell membrane, a shell membrane potential, this is your electro, like you can say liquid junction potential or diffusion potential, okay. And this shell membranes and diffusion potential will combine and the total potential you will get at the response of the well logging or your SP log, okay. हालांकि यहाँ पे काइनेटिक पोटेंशियल भी होता है. अगर मैं थोड़ा सा आपको चीजें बताना चाहूँ तो मैं ऐसे बता सकता हूं, आई विल टेल यू कि देयर इज ए टोटल पोटेंशियल, यू विल सी टोटल पोटेंशियल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ माय डियर इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोकाइनेटिक आल्सो ए टू टाइप पोटेंशियल like shell potential and like mud cake potential, okay. Mud cake potential and electrochemical are the two type, my dear. The first one is your diffusion potential and the second name also that you can say liquid
liquid junction potential, because liquid and liquid is junction. You will see this potential, you will see liquid junction or diffusion potential. And now another kind of potential, your membrane potential. Okay, membrane potential or membrane potential you can say. So because this shell acting as a membrane of these ion movement from this point to this point. So this is, so this total potential will give the result of your total potential in your SP log, either the deflection positive side, either deflection negative side. Okay, हालांकि these are the things will take lot of time. अगर मैं ये आपको चीज़ें बताने जाऊँ तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, बट अभी के लिए मैंने एक ओवरव्यू आपको दे दिया है. ये चीज़ें क्लासेस में हम लोग काफ़ी डिस्कस कर ली हैं कि why these potential is not acting perfectly. These potential will cancel out each other, or whatever the response you are getting in SP log, that will be only because of this, or maximum potential you will because of this. Okay, now the thing is that sir और कुछ बता दीजिए और इसके बारे में. देखिए यहाँ पे हाउ मच नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू विल सी कि मैक्सिमम पोटेंशियल इन द एसपी लॉग जस्ट बिकॉज ऑफ यू विल सी 4 ऑप्शन. तो द राइट ऑप्शन विल बी दिस. ओके, एंड दीज ऑप्शन, दीज पोटेंशियल इज वेरी लेस एंड ऑल्सो नेगेटिव साइड. सो दिस इज +5, तो दिस इज -5, so you will cut it out. So there is no contribution in this particular deflection. The contribution of this only, and this is the maximum contribution. Okay, चलिए, no problem. And now if I'm telling you, sir, the question is that, my question is not that, my question is that, sir, what are the condition which gives your positive deflection, which gives you the negative deflection. So my question is that ki how you will get the positive deflection and how you will get the negative deflection. That's the main point here. Okay, this is the question is based on. Okay, now I will tell you my dear. So I know this particular formula, SSP equal to minus K, you can say minus 71, or you can say the log, you can say RMF upon RW. Okay, no problem. The case number 1 I am writing means RMF is greater than your RW maybe, means whatever the fluid you are sending, that resistivity is maybe the higher of formation water resistivity. Okay, and you can also write this you can also write this condition in the salinity form. In salinity form, sir, I am not getting. Okay, I am telling you, if resistivity of mud filtrate is higher, so definitely the salinity of mud filtrate is lesser as compared to the salinity of formation water. Okay, so I will write this in terms of salinity and the sign will be opposite. Mean this resistivity is higher, so definitely salinity will be lower. Okay, no problem. And now what the result you are getting in this particular situation or case. Okay, so if the resistivity of mud filtrate you are putting higher value, suppose 10 upon 50, and this value is what, which means this value is lesser, this value is higher. So RW is lesser, RMF is higher, so I am putting this is value 5 lesser. So I will say this is your value of 2 greater than 1. So log greater than 1 value you will see the positive. Okay, and there is also a negative you will see outside. The positive negative you will see the negative deflection in the SSP, means result will be total negative. Okay, means this value positive and positive negative, the total deflection will be towards the negative side. Okay, when this condition exists. Okay, now if the second number case, if you are having second number case, means resistivity of mud filtrate is less than resistivity of formation water. If you can write in terms of salinity, matlab salinity of mud filtrate will be higher salinity of formation water. When the resistivity of mud filtrate, whatever mud we are injecting, that mud has lesser salinity as compared to formation water, formation fluid. So it means the resistivity is lesser, it means salinity is higher. No problem. So in that case, if you are resistivity of mud filtrate lesser, so what I will do, this time I will put suppose 5, and resistivity of water is higher, means 10. So this will be less than 1 value you are having, and log less than 1 value you will see the negative, and negative or external negative will create a positive deflection, means overall result you will see the positive, means you will see the positive. So maybe this is the question that has been asked in GATE 2019.
2019 that is based on the resistivity, and maybe in future the question can be asked in based on salinity. That's why I am telling you also this. Okay, no problem. So now you will see, now when the salinity, listen carefully, when the third case you will see, third case means RMF or equal to RW, means you can also write salinity of mud filtrate equal to salinity of formation water, means resistivity. इत्तेफाक से coincidentally you will see the salinity of mud filtrate equal to salinity of formation water. It means when you are putting 0 and 0, 1 and 1, so you will take log 1 value 0, so you will take SSP value, you will see the 0. So it means, okay, ये चीज मैंने formula base से explain कर दिया है, but I have explained this particular thing by graphically, और ion exchange कैसे होता था, how the ion will exchanging from this particular layer to this. Suppose this is your permeable zone, how the ion is exchanging from this way, this is your diffusion potential membrane. So this thing I have already explained in our lecture कि हम लोग इस graphical और इस ion movement से कैसे चेक कर सकते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव डिफ्लेक्शन कब आता है, when we are checking this deflection positive negative by this particular ion exchanging method. बट मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला से आपको चीजें दिखा दी हैं. So now RMF of RW equal to no deflection, 0 deflection, Q goes to 1, Q goes to 1 means this can be right or this can be right. R resistivity of mud filtrate greater than formation water, resistivity of mud filtrate greater than formation water, it means negative deflection you will see. It means this goes to negative deflection, means P goes to third, P goes to third means this will be your right answer. Okay, no problem my dear. You can see your deflection may be 0, deflection may be positive, deflection may be negative. Okay, no problem. So now your answer will be B. Okay, chaliye. So now this is the right last question or sixth question of the formation evaluation, my dear, or that has been asked in GATE. Okay, so this is very simple question, and examiners already give the formula. If you don't know the formula, so you can still do this particular question. Okay, no problem. The sonic log parameter from an exploratory level and the measure sonic log data we are having. This one and this one and this one. I told you 3 value will be given, so then you can approach to the porosity. Okay, no problem. And he is telling us to calculate the hydrocarbon saturation in percentage. I have to calculate in the reservoir. Okay, ठीक है, and I have formula also. Hint is given in GATE, means this formula is given, this is given. Okay, so I will suppose I have to calculate the water saturation. Listen, how to approach this particular question. I have to calculate the hydrocarbon saturation. So I can calculate 1 minus saturation of water. Okay, so if I am calculating this and I am doing the 1 minus this, so I will approach to the final value of my answer, hydrocarbon saturation. No problem. So now the question arises कि how to approach this, how to calculate this now, and you will see the formula is given. If you have this, so you will calculate the water saturation. No problem. So now you will see कि all the data you are having or not. No problem. I will see, sir. I will have A value or not. Yes, A value is given. A value is given or not? A value, yes. A value is given. No problem. Phi value you are having or not? Yes. You don't have the phi value. Okay. RT values you are having or not? Yes, RT value is given. Okay, SW I have to calculate. RW you are having or not? Yes, RW also having. It means I am having this, I don't have this particular phi value. Okay, so can I calculate phi value by this particular method? Yes, I can calculate. Okay, so can I have this value or this value or this value? So can I calculate the phi value? Yes, I can calculate. So my main method, my main target to calculate phi first, then I will put this phi in this equation, then I will calculate SW, then I will calculate hydrocarbon saturation. So these 3 steps I have to do. Every formula is given here, only I have to put the value, no conversion, nothing else, only you will get the calculation. Okay, chaliye. So my first calculation is that, if I am arranging this particular formula, so you will get phi equal to delta T log minus delta T
matrix upon delta T fluid minus delta T matrix. So phi equal to delta T log you are having 85 minus matrix means 45 upon fluid means you are having 205 minus 45. और मैंने हमेशा आपको बोला है कि जल्दी और इजीली याद रखने के लिए what you can do lower lower higher medium. ओके यही तो मैंने बोला था आपको, ठीक है, वही चीजें हैं. तो फाई इक्वल टू यू कैन कैलकुलेट माय डियर. सो आई एम डूइंग द कैलकुलेशन फॉर यू. 85 माइनस, एक्चुअली लेक्चर इज गोइंग ज्यादा हो रहा है तो थोड़ा सा इसको जल्दी से मैं करा देता हूं आप लोगों को. 205 माइनस एंड 45. ओके तो यू विल सी द पोरोसिटी वैल्यू इज 0.25. नो प्रॉब्लम, डायमेंशन लेस. ओके पोरोसिटी मीन्स फर्स्ट टारगेट हैज बीन कंप्लीटेड. ओके नो प्रॉब्लम. सो नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल कैलकुलेट SW. Okay, how I will calculate SW? I will put the formula. Okay. RW I am having or not? Yes, RW I am having 0.1. Okay, 0.1 equal to 1 upon A. A means 1. A means where is the A? Yes, A is given 1. So it will be 1 upon 1. Okay, you can avoid it. So now phi means 0.25. 0.25 is square. Okay, multiply RT. RT is what? RT, yes, given is 10. RT is given 10. Okay, SW I can calculate from here. Okay, SW I have calculated from here. So now you will see 0.1 equal to, okay, 0.25 square, so you will write here 0.0625, okay, multiply 10 and SW square. So now you will see SW square equal to 1 by, this is your 0.1, 0.0625 divided by 10. Okay, so what I will do, 0.1 divided by 0.0625, okay, and divide by 10, you are having this, and means SW square equal to 0.16. Okay, so what you will do, you will do, this will be under root 0.16. Okay, so now 0.16 under root 0.16, so you will get as water saturation equal to 0.4, means 40%, 40% your water saturation, and hydrocarbon saturation will be 1 minus water saturation. Hydrocarbon saturation equal to 1 minus 0.4 means 0.6, means 60% hydrocarbon saturation. No problem. It's a very simple question. Every formula is given. ये आपको कोई दिमाग यूज नहीं करना है. तो your answer or range of the gate is given, means 59 to 61, or your answer you are getting is 60% because you have to calculate in percentage. Okay, chaliye. So this is all about today, and next session we will see the questions which has been asked in GATE 2020 from the formation evaluation. Thank you very much. Have a nice day.